हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट। सो गाइज, आज हम बात करेंगे स्टॉक टिप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है, तो सहयोग दीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइज, आज हम बात करते हैं स्टॉक टिप्स के बारे में। फर्स्ट स्टॉक है हमारा MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। Okay, Multi Commodity Exchange of India with a target price of rupees 2400, 2400 का टारगेट है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज ₹2025. Multi Commodity Exchange of India Limited, incorporated in the year 2002, is a mid-cap company having a market capital of rupees 10,255.77 crore, operating in financial services sector. This is the technical chart. MCX India 2049.70 with a target price of ₹2400. Recommendation: hold. Okay, Multi Commodity Exchange of India Limited key product revenue segment include fees and other charges and other operating revenue for the year ending 31st March 2022. Okay. Financials for the quarter ended 30 June 2023, the company reported a consolidated total income of rupees 166.21 crore, up 8.05% from last quarter. Total income of rupees 153.83 crore and up 40.80% from last year same quarter. Total income of rupees last year total income of rupees 118.05 crore. Company reported net profit after tax of rupees 20.92 crore in latest quarter. Okay, promoters FII Holdings. Promoters held 0% stake in the company as of 30 June 2023. FIIS owned 24.84%. DIIS 39.31%. Okay, so guys, MCX, Multi Commodity Exchange of India with a target price of rupees 2400. MCX is rupees 2025 करंट मार्केट प्राइस। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। हैविंग अ मार्केट कैपिटल ऑफ रुपीज 10,255.77 करोड़, ऑपरेटिंग इन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। ओके, सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। बोलो राधे राधे।